Hello students and welcome to today's class. In the previous class we were discussing about the classification of plant kingdom, and we have seen that the plant kingdom is divided into five different divisions. तो उसको हम लोग पांच different divisions में divide कर दिए हैं. सबसे पहला group जो होता है आपका the division it is Thallophyta or Thallophytes you can say, which generally refers to the algae. The second one the Bryophytes, third one Pteridophytes, fourth Gymnosperm, and the last one are the Angiosperms, which are also known as the flowering plants. तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. Today we'll start with the first one, that is the Thallophytes. Okay, so let's start students. Now Thallophytes, when you talk of Thallophytes, they generally include algae. इनमें ज्यादातर algae ही होते हैं. They are chlorophyllous in nature. Chlorophyllous means they contain chlorophyll, as you might know this. और chlorophyll का काम होता है कि वो आपको photosynthesis में help करता है. So if it is carrying out photosynthesis, it will produce its own food in the form of glucose by utilizing sunlight and chlorophyll. So as because it can prepare its own food, it is also called autotrophic. तो यहाँ पे एक word हम लोग use किए हैं autotrophic. That means it is capable of producing its own food. Now they are simple organisms. You will find कि उनका body type ज़्यादा complex नहीं होता, with no specific kind of organ systems or any complicated structures. So their body is simple organisms, and they can live both in fresh water as well as marine water. Marine water refers to the salt water. तो ये लोग marine water और fresh water दोनों में रह सकते हैं. They can be unicellular. कुछ unicellular algae होते हैं. Example हो गया आपका Chlamydomonas. Or they can be colonial, मतलब they live in colonies, they live in groups में रहते हैं वो लोग. Example Volvox. And they can be filamentous, or they can be filament in the form of thread-like structures. पतले पतले ribbon जैसे लंबे thread-like structures में होते हैं. And example हैं उसके Eulothrix and Spirogyra. These are the two examples of such organisms. Now on your screen that is displayed is Chlamydomonas. आपके स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं आप लोग वो Chlamydomonas है. So you can see it is quite green in color because it is chlorophyllous. Second picture is of the Volvox. ये colonial होता है. If you see here, this Volvox they live in small groups. These are called as colonies. So this is a colonial organism. And the third one is Spirogyra. Long thread-like structures, Spirogyra. These are ribbon-like. So they are the three different forms of algae. Algae can also be found to be living as symbiotes. वो symbiotically lichens के ऊपर lichens के हिसाब से रह सकते हैं. Now lichen एक type का symbiotic relationship है between algae and the fungus. Algae और fungus के बीच में एक symbiotic association होता है, उसको lichen बोला जाता है. और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं in the chapter of biological classification. Now what is their mode of reproduction? अब ये reproduction तीन अलग अलग मेथड से कर सकते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उनका थ्रू फ्रेगमेंटेशन. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर. नाउ दिस जूस्पोर आर मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड. उनमें फ्लैजेला होता है तो वो मूव कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे आप लोग क्लामाइडोमोनस में देख सकते हैं, इट हैज फ्लैजेला. So these zoospores are asexually reproducing units of the algae, and they are motile and flagellated. And the third mode of reproduction that they carry out is sexual mode of reproduction, and that is directly by the fusion of gametes. We know sexual reproduction occurs by the fusion of male and female gamete. तो आपका जो मेल गैमेट होता है वो जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है वो एक सिंगल सेल बना लेता है जिसको जाइगोट बोला जाता है. Now this zygote will further develop and it will form a new organism. और intermediate stages होते हैं आपके, जैसे आपका embryo हो गया, placenta हो गया. These are the different stages you will find. So we will not get into that. Simply बोला जाए, sexual reproduction it includes a fusion of male and female gametes, and these organisms also have the capacity of sexual reproduction. तो तीन मोड के reproduction होते हैं: vegetative propagation by fragmentation, asexual reproduction by zoospore, and the sexual reproduction by the fusion of male and female gametes. Gamete fusion की तरह होता है. The next point is gametes can be flagellated and similar like in Chlamydomonas, or they can be non-flagellated like in case of Spirogyra. तो कभी कभी ये जो आपके गैमेट्स होते हैं, ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम लोग बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो गैमेट्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. कभी कभी गैमेट्स में फ्लैजेला होता है, फ्लैजेलेटेड बोला जाता है.
so that they can move. और अगर सिमिलर है तो उसको हम लोग क्लामाइडोमोनस का एक एग्जांपल दे सकते हैं. तो in example of chlamydomonas you will find कि both the gametes male and female they will be flagellated and similar, but in case of Spirogyra both the gametes will be similar but non flagellated. तो Spirogyra के केस में आप लोग देखेंगे कि उनका flagella नहीं होता but similar. Male and female gametes are quite similar in structure, shape and size. Next point, if the gametes are of similar size, they are called as isogamous, and the gametes are called as isogametes. The fusion process is isogamous, and if the size and shape is dissimilar, it is called as anisogamous. The term iso means similar. ये जो iso word है इसका मतलब होता है similar. Gamy मतलब fusion, and it generally refers to the gametes as well. तो आपका isogamous मतलब when the gametes are of similar shape and size. But if the gametes are of dissimilar shape and size, it is called as anisogamous. Okay. The next point is इसी के related ही next point है आपका fusion between one large non-motile female gamete and a small motile male gamete refers to as oogamous. Example है Volvox. So this is a very unique kind of, you can say, a specific kind of fusion of gametes जहाँ पे आपका फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होगा, इट विल नॉट मूव, ना कोई फ्लैजेला होगा ना कोई सीलिया होगा, नो मूवमेंट एट ऑल, तो वो स्टेशनरी रहता है. और मेल गैमेट जो है वही ट्रैवल करके आपके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है. द मेल गैमेट विल ट्रैवल एंड रीच द फीमेल गैमेट टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. So that is called as oogamous. So you can say oogamous is a special kind of gamete fusion. Okay. Now यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे आपको तीन अलग अलग जो टर्म्स हम लोग अभी देखे उसका एग्जांपल दिया हुआ है. Now here you will find the first one is isogametes. This one with a circle with plus sign, that is a female, and the one with minus sign, that is a male individual, male gamete. तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों अगर सिमिलर हैं उसको हम लोग आइसोगैमेट्स बोलते हैं. ओके. और अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर साइज शेप में अलग अलग हुए, जैसे यहाँ पे फीमेल गैमेट बड़ा है मेल गैमेट छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है, साइज इज डिफरेंट, वैसे में कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे एनाइसोगैमस. If the structure, says, shape and size are not completely similar, that is called as anisogamous. And ये एक पॉइंट याद रखना आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फीमेल गैमेट लार्जर ही होता है, ठीक है, मेल गैमेट विल बी क्वाइट स्मॉलर. सिमिलरली ये एक एग्जांपल है oogammy का. oogammy में क्या होता है, एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है. अब देखिए ये डिफरेंस आ जाता है आपका एनाइसोगैमस और oogamous में. एनाइसोगैमस में आप लोग देख सकते हैं कि दोनों मोटाइल हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, लेकिन oogamous एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है और गैमेट फ्यूजन है जहां पे फीमेल गैमेट जो है एग सेल वो बहुत लार्ज होता है, whereas the male gamete sperm will be very very small. ओके. तो दोनों के साइज में तो डिफरेंस होता है, शेप में भी डिफरेंस होता है, मोटिलिटी में भी डिफरेंस होता है. So this is also seen in case of certain algae. In fact, you can see this oogammy process in case of humans as well. Humans में भी वही होता है, हमारा जो female gamete होता है egg cell और ovum, it is very large and non-motile, whereas the sperms are very small and motile in nature. They are very much movable and they are motile. ठीक है. So this is the three different terms: isogamous, anisogamous, and oogamous. Oogamous का example Volvox. Now certain algae can be very massive with multicellular plant body. Example kelps. तो ज्यादातर हम लोग जो भी एल्गी देखते हैं ज्यादातर वो लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉलर बॉडी साइज होता है, यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ. तो जब एल्गी हम लोग देखते हैं तो वे जनरली थिंक इट ऑफ टू बी ए वेरी सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट ये जो कैल्प्स होते हैं दे आर वेरी मैसिव एल्गी व्हिच आर मल्टीसेल्युलर. सो दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इज कैल्प, और ये ज्यादातर मैराइन होते हैं. दे विल ग्रो इन द सॉल्ट वाटर, सी एंड ओशंस मेनली, and not very deep into the sea and oceans. Remember this, the kind of algae grow generally towards the surface and towards the shore, not deep in the ocean, क्योंकि इनको sunlight चाहिए होता है. तो deep in the ocean अगर grow करेंगे their outgrowths will not be able to reach till the surface to receive sunlight. तो कैल्प्स होते हैं, और ये कैल्प जो होते हैं इनका भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है. We'll discuss that in the next class in the how algae is important to us economically and in other ways. So this is a brief overview about the characteristics of the first group of plants, that is thallophytes, commonly known as
algae. So in the next class, we'll move on to the economic importance of